Hey yo YouTube, what's up? It's me Chef from Copy.360 and today we learn about the layer style from the Photoshop and how we convert the 2D text or image into 3D. So it's simple, as a basic technique, come to the screen. स्क्रीन पे आप लोग आगे हो गए और मेरा छोटा सा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, छोटा सा नजर आ रहा होगा। देन जब स्क्रीन रिकॉर्ड कर दिया लाइक दैट, सिंपली अगर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल लिखूं, मैं सबको डिलीट करता हूं। ओके, आई वांट टू नो ना 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 na 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 na. I create a new create. Okay, simple. Make a gradient. 2021 has a good gradient. Too much gradient impression on it. So I like that. I like this. I like this. I like this. Go with the redial and reverb. Okay, reverse. Okay. That's feel good. That's feel touches and nice, bro. Nice. Now come to the another key. Press T on a keyboard. We have a text layer. Okay. Then I want to start just like hi YouTube. Hi YouTube. Okay. And this is done. I check this out. Now if I double click in the edge, मतलब कि आप किसी भी लेयर की जब एंड पे क्लिक करते हैं, जस्ट अ लेयर, और इसके एंड पे जब आप क्लिक करेंगे, सो जैसे क्लिक करेंगे दिस इज एन ऑप्शन अवेलेबल लेयर स्टाइल। अगर ये आप लोगों को ओपन नहीं होता टेल मी, आई गिव, मैं आप लोगों का शॉर्टकट भी बता दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसका शॉर्ट की मैंने गिवन की होगी, आप लोग देख लें जाके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लिक ऑन बेवल, तो चेक दिस आउट। नजर आ रहा है कोई डिफरेंस थोड़ा बहुत? ओके वेट सेकेंड, जस्ट गिव मी द सेकेंड। आई ओके दिस आप लोग इस आने की, ताकि आप लोग को एक टेक्निक है, गो टू अरेंजमेंट, ठीक है, न्यू विंडो इमीडिएट पर, ठीक है, ये कर लिया। एंड देन इसके बाद आप जाके इधर मार लें अरेंजमेंट एंड टू हॉरिजॉन्टल। इफ आई जूम अप वन एंड वर्क हियर, सो इट ओके, चेक इट आउट। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ ये बेवल हटाऊं तो लाइक दैट हमें समझ आ जाएगी कि बेवल क्या है। यहाँ पे इसको क्लिक किया और दूर से तो हमें सन समझ नज़दीक से कैसा होगा, ठीक है। और इफ़ यू वांट लाइक डिफरेंट लाइक दिस एनी काइंड ऑफ यू वांट, इट विल चेंज इट लाइक दैट। देखिए simple but I go with this and double click on it and I make it a like dramatic look with the drop shadow. Drop shadow is too much awesome, bro. Drop shadow का जो मजा है वो किधर नहीं है, seriously. Drop shadow आप click करें, just go and turn this out. No change, it's feel like good. I change the opacity a little bit high and check this out, bro. Check this out. Or if you want to your pattern or texture here, so it's available on there, but texture I don't prefer you to go with texture. It's not good for means not having a good impression on video, or you are imagining text. Okay, so if you come out and again I will come with the content one tile, okay, and then check this out. How is it different with the simple two effects? This is better or this one? Which one is better? Check it out. Simple. Hi YouTube, it's no interesting, but when you just like that, how dramatic the lights, the black shadow, और इसके लिए आपको कोई GPU या आपके पास कोई हाई स्पेसिफिक PC नहीं होना चाहिए। जैसे Ryzen होगा तो काम होगा, लाइक दैट यू कैन स्टार्ट विद Copy.2। आपके पास Copy.2 है तो भी स्टार्ट कर सकते हैं। If you have i3 i5 with minimum 1 GB gigabyte cards or 512 GB graphic cards, so it's fine, okay, it work, okay. So now I come to the other technique. This is the first for bevel, and I'm showing the next technique is like the neon light look. Control N for neon. Control N. Okay, we created. I change the gradient. Come with the black. Where's the gray? Grades are like been good or done with redial. Change to redial and reverse it. And done, it's fine. And go with it. That's good. Now if simply T on a keyboard and check this out. T on a keyboard and check this out. Okay, I simply type copy, or my mistake, Copy.360. Copy.360. Okay, and
Simply if you want to addition like that, Control T for this, and I say simply double click on here and Control T and change the size like that. I change to the 700. 700 it's fine, and 700 man. My mistake, I off the button. 700. Now I come to this. So this is good. If everyone want to just like the double click edge of the video, like edge of the layer, double click on it and simply come with the drop shadow. It's fine. Change the direction if you want this or this. Basically light come from this place, and if I change the outer glow, check this out bro. Simply I show the techniques. If you go with the overlay, it's a fine. If you go to soft, it's fine, but go with the normal best. And I change this to the like that, pink. Literally I love pink color. Pink color is totally awesome. Pink color मुझे बहुत पसंद है, और लड़के मुझे कहते हैं this love pink is for girls. I say no, it's pink is not just for girls. मैं इधर आपको फिर मतलब कि zoom करके दिखाऊंगा तो आप लोग ज़्यादा अच्छे समझ आएगा what we change here. Okay, double click here and I change this. Purple is totally not pink. Pink is fine, and change normal is not too harsh, and take that. This is fine. This check it out. Okay, and how is good. If you want, just change this outer glow. Double click outer glow. Change the color with the blue. Okay, copy this and come to the inner glow, double click on it and Alt V. And if I open bevel, it's make more dramatic like that. Copy.360 in a 3D style. It's fine, look good. Now okay, ये हो गया. अब आप लोगों को मैं एक सिंपल एक और चीज़ बताता हूँ. Control N for example. I pick any kind of logo. Control O for open, and I pick the logo like this, and V for this. I put on this and there. Control T for fading. Okay, and double click on here, and I put like that drop shadow. Check this out. Check this out bro, check this out. How much interesting. If I double click on here and I change to bevel. बेवल का मज़ा नहीं आ रहा. So like that आप लोगों को इसको लोगो पे भी यूज़ कर सकते हैं. मैं अगर एक और भी ओपन करके आप लोगों को अच्छी एग्जांपल दे सकता हूँ, इससे भी अच्छी एग्जांपल दे सकता हूँ. अच्छी बात होगी, मतलब कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा. I delete this and I simply Control T, open it and simply make it smart. Done, and double click on there and just put a drop shadow, distance between there and little. Okay, drop shadow, make opacity to light, and come to bevel. Bevel is totally fine. Inner glow, no, I don't want to inner glow. I just want to like that outer glow. No. Wait a second, I have this also भूल गया शायद. भूला नहीं like that. No. Inner shadow, no, I didn't want. Coordinate, this is the thing. This is the thing I want to tell you. So, look, check this out. अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला है और आप लोगों ने कुछ भी सीखा है from this video or lecture, boring था थोड़ा, पर कुछ भी सीखने को मिला है तो then give like, thumbs up and share me. और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार का. Love you so much. Allah Hafiz.